Bom dia, sejam todos bem-vindos novamente. Meu nome é Sandra Azevedo e hoje nós estamos falando aqui do Centro Nacional de Meditação da Sahaja Yoga em Olhos d'Água, no seminário do Shivaratri Puja. Então, hoje nossa meditação será com a atenção em nosso Anahata esquerdo. Já com a postura da meditação, mãos abertas em direção a Shri Mataji. Olhamos para a face dela. Inspiramos, pausamos e expiramos. A atenção nesse momento está em nossa respiração. Juntos vamos elevar nossa Kundalini e dar os banhos. Namastê. Nossa mão direita em direção à Mãe Terra, nossa mão esquerda em direção a Shri Mataji e a atenção em nosso Muladhara. Mãe, por favor, esteja presente na forma de Shri Ganesha em nosso Muladhara. Vamos concentrar nossa atenção em nosso Muladhara. Ó Mãe, por favor, estabilize o poder da inocência, da castidade e da auspiciosidade de Shri Ganesha em nosso Muladhara. Mãe, por favor, desperte e ilumine o princípio de Shri Ganesha dentro de nós e o princípio de Shri Kundalini dentro de nós. Vamos sentar de forma ereta para permitir o poder da Kundalini passar pela nossa coluna. Shri Ganesha, por favor, mantenha-me no belo reino de inocência espontânea e concede-me a sabedoria. Mantra Shri Ganesha. Om Tuameva Sakshat
Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Nossa mão direita vem em nosso anahata esquerdo, coração do lado esquerdo. Vamos sentindo as batidas de nosso coração enquanto afirmamos: Mãe, por vossa graça, eu sou o Espírito, eu sou o Espírito, eu sou o Espírito. Mãe, por favor, vem em nosso coração, ilumina nosso coração, abra nosso coração e nos permita sentir o Espírito, sentirmos essa pura consciência, essa verdade, essa alegria. Mantra Shri Shiva Parvati. Om Tuameva Sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Agora juntos, vamos recitar alguns nomes de Shri Shiva. Os 10 nomes sagrados de Shri Shiva. Há um para o auspicioso, o doador de auspiciosidade, aquele que é paz, que é o espírito auspicioso, aquele que é o mais elevado, o mais auspicioso e belo, que é o caminho da auspiciosidade, diante de quem todos se prostram. Eu me inclino ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Om Shivam Shivakaram Shantam Shivakaram Shivottamam Shivamangar Pranetaram Pranatosmi Sada Shivam. Tu és puro. Om Shri Shiva Namaha. O doador de benevolência, auspiciosidade e paz. Om Shri Shankara Namaha. Nascido de si mesmo. Om Shri Swayambho Namaha. O Senhor e protetor dos animais. Om Shri Pashupati Namaha. O lugar do perdão. Om Shri Kshama Kshetra Namaha. O favorito dos devotos. Om Shri Priya Bhakta Namaha. O Deus do amor. Om Shri Kamadeva Namaha. Alcançado facilmente pelos santos. Om Shri Sadhu Sadhya Namaha. A
aquele que reside no lótus do coração. Om Shri Rutpundarikasana Namaha. Aquele que deseja o bem do universo. Om Shri Jagathitaishi Namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Subimos nossa mão até o nosso Sahasrara. Vamos massagear com um pouco de pressão o nosso Sahasrara, um pouco sentido horário, e pedimos: Mãe, por favor, estabiliza a realização do Si em nós. Mãe, por favor, permita-me sentir a minha yoga. Permita-me sentir essas vibrações, esse batismo. Subimos nossa mão sem encostar no cabelo. Passamos um pouco para frente, para trás, tentando perceber as vibrações batendo no centro da nossa mão, confirmando o nosso batismo. Vamos checar também com a mão esquerda. Abaixamos as mãos e continuamos com a atenção em nosso Sahasrara. Abrimos nossos olhos e vamos assistir a segunda parte da palestra de Shrimata de 2003, Shri Shivaratri Puja, Índia. Peace you cannot joy. If you cannot give peace to others, how can you have joy? And the way people treat others in such a contemptuous manner, it's very surprising. What do they think of themselves?
Why should they think so low about other people? It's beyond understanding to see a man losing temper on small things. But actually they are cowards. If it comes to some facing some real problem in life, they recede back. Then they cannot come forward. This is the biggest tragedy of the whole thing. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे नाम उसके होते हैं और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर उसको माफ़ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सज़ा लेंगे? कौन आपको सज़ा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सज़ा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही असली है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं है। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है? क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हुई इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह ले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इससे कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है उसको आप माफ़ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूँगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी, पर मनुष्य में कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला। वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब
इस प्रकार के 2-4 तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत ज़बरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज़्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते हैं। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें, पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं अपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज़ नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगी को नहीं फंसना चाहिए, ये बेकार की चीज़ है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं तो क्यों गुस्सा करते हो?
अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद।
Nachashrotra jive, nachagrana netre, nachavyoma bhumir, natejo navayu, Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha prana samyao Navai panchavayor Navasapta dhatur Navapanchakosha Navakpanipadao Nachopastapayo Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Namedvesharagao Namelovamohao Madoneva meneva Matsarya Bhava Na dharmo na charto na kamo na moksha Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyam na papam na saukyam na dukkham na mantro na tirtham na veda na yajna aham bhojanam neva bhojam na bhokta Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Name mrutyu shanka Name jati beda Pitaneva meneva matana janma Na bandhur na mitram gurur neva shishya Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Aham nirvikalpo nirakara rupo vibhor vyapya sarvatra sarvendriyani sada me samatvam na muktir na bandha Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Essa oração que ouvimos é o Taj Niskala por Sri Adi Shankaracharya e quer dizer o seguinte: aquele que está além do tempo.
Não sou a mente, nem o intelecto, nem o ego, nem o pensamento. Não sou os ouvidos, nem a língua, nem o nariz, nem os olhos. Não sou o éter, nem a terra, nem o fogo, nem o vento. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Não sou a energia da vida, nem as 5 respirações vitais, nem os 7 elementos do corpo, nem os 5 invólucros do corpo, nem os órgãos de purificação, nem a fala, nem as mãos, nem os pés. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Não tenho aversão nem preferências, nem apego, nem ganância. Não tenho orgulho, nem inveja, nem dever, nem riquezas, nem desejo, nem liberação. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Não tenho virtude, nem vício, nem prazer, nem sofrimento. Não tenho local sagrado, nem mantra, nem Vedas, nem Rava. Não sou aquele que come, nem a comida, nem o prazer de comer. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Não tenho medo da morte, nem distinção de castas. Não tenho pai, nem mãe, nem nascimento eu tenho. Não sou discípulo, nem guru, nem irmão, nem amigo. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. Eu sou sem dúvidas, eu existo sem forma. O onipresente eu sou. Eu dou vida aos sentidos. Sou eterno, imutável, não sou livre nem apegado. Eu sou a felicidade eterna e a consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva. A nossa meditação está terminando. Vamos juntos elevar nossa Kundalini e dar os bandas. Namastê. Obrigado a todos pela companhia e um excelente dia a todos. Até a próxima meditação. Jai Shri Mataji.